Hello. How's everyone doing? क्या हाल चाल है सबके? First of all, happy International Women's Day and happy महाशिवरात्रि सबको. We have somebody. बहुत दिन से बहुत लोग बोल रहे थे. शाहिद भाई is back with us. शाहिद भाई, how are you doing? Hi guys, good to be back. शाहिद भाई, शाहिद भाई, I love. आप तो जानते हो, there's a lot of love and respect. But I just love the energy. जब भी हम लिवरपूल के बारे में बात करते हैं आपके साथ बहुत मजा आता है. शायद मैं I mean, because we do a lot of WhatsApping, you know, so I haven't been on for a long time because हम अपना सारा कुछ WhatsApp पे एक दूसरे से उतारे, लेकिन I'm really happy to be back. Love the show and it's doing great. You guys are doing fantastic job. 2 thumbs up. Keep it up. Thank you so much. Shahid bhai Shahid bhai has been kind enough to steal some time from him, his अपने busy schedule में से. तो ज्यादा time waste नहीं करेंगे. Shahid bhai, let's jump straight into it and let's address the elephant in the room. Match start होने से पहले मसाला start हो गया. Right? Trent's comment between us and them. Yes. I think it was a 4-4-2 interview that he's done, from what I understand. And now Haaland has said something. I think Bernardo ने भी कुछ कहा है कि Ruben Diaz. Yes. Now the thing is, my son mentioned to me that he thinks Trent is in their head, and that's a good thing actually. So let's see कि आगे क्या होता है क्या नहीं होता. But at the end of the day, they have never won at Anfield with Klopp, with the crowd, and they have a terrible record even before Klopp. And the stadium is going to be crazy tomorrow. Look, I've been a few times since that the whole stand has been open. वो सिर्फ एक sliver सा है, वो 1000 बंदों का, which is basically the hospitality rooms. So उसके अलावा the whole stand is open, and I have to tell you, it is imposing as hell, including the Klopp. The Klopp is the smallest stand in Anfield now, and the main stand is massive. And by the way, massive होना एक चीज होता है, they make a lot of noise in the main stand. So अच्छा अभी वहां से आवाज आ रही है? Oh, like crazy! They lead the stadium now. They lead the stadium, and like crazy. They're totally into it, and I have to tell you, it's a very, very intimidating atmosphere. Anfield is. It is right up there with Tottenham Stadium. Like Tottenham Stadium is a very intimidating atmosphere. I have not been to the Emirates since they improved their atmosphere. But I have to say, I don't see Liverpool losing many matches at Anfield. If the team is good and the manager is in sync with the players and the fans. And that Klopp definitely has. And then on top of that, it's the last 2 months of Klopp's reign, and the crowd is extremely emotional about it. And then itna bada crowd, itni badi game, Sunday afternoon, top of the league, crowd ka bahut factor hona hai. Bahut factor hona hai. Home or away ka massive factor hota hai. वैसे भी. And for us to get the points, the crowd is a massive factor. Look, we should have beaten Arsenal. Okay? We missed an amazing chance, and we had a pure handball. Okay? That was our game to win. Now, away from home, you go to Arsenal, you make a mistake, you're going to lose the match. We were pretty much on the back foot against City away from home. The equalizer saved us. हम बच के निकल आए. ठीक है, लेकिन हमारे गोलकीपर ने मिस किक किया. Crowd was on top of him. I remember when we went there and we played them 2-2, and De Bruyne scored in the first 6 minutes with a deflected goal, if you remember. I have to tell you, that was all because of City's crowd. City's crowd is extremely intimidating when Liverpool play them. They are up for it. It's not like Joe Bucky's weekends. So the Anfield factor, regardless of who's playing, it is, and City have not shown themselves to be able to manage that. So they're making all these comments, but frankly speaking, Virgil versus Haaland, they're still going to be ऐसी वैसी कोई बात नहीं है. वर्जिल अभी जवान है, और वर्जिल बहुत अच्छा खेल रहा है ये सीजन शायद भाई, जो मतलब he has come back to his peak. बहुत लोग ने बहुत कुछ कहा था, and वर्जिल ने has really responded really well this season. ये जो आप इमोशन की बात कर रहे हो ना, excuse me, I think
जब भी क्लॉप ने अनाउंस किया था ना शायद भाई हमने ये चैनल पे स्पेशली मतलब आई जस्ट फेल्ट कि this emotional tsunami which we'll have is going to be the toughest thing that teams have to conquer when they play us now. आप देख लो despite the number of injuries the emotions are getting us through a lot of times. Like Darwin Nunez against Forest, prime example. Yeah. Is Look, like it was just it obviously tactically we do a lot of things. But I many think people mentioned it. It was going to go one way or the other, right? Yeah. या तो Yeah. टीम ने बिल्कुल चले जाना था, बैठ जाना था, या उसने उठ जाना था. दरमियान वाला, it wasn't going to be in the middle. So luckily for us, you know, he managed to get the players. Credit to the players, actually. It's not always the manager. Credit No, to the of course. players like McAllister, you know, Szoboszlai. They just got there. Okay, Endo. they got hit. Endo, they got hit with this. Even the youngsters got hit with this runaway train in the face. Like, imagine being a guy like Clark or a guy like Bradley. You have you are gonna be the next Trent, and the person who's made the next Trent is gonna make you the next Trent. And all of a sudden, he says, "I'm leaving." I mean, if I was Bradley's family or Bobby Clark's family, मेरे घर में तो matam ho gaya hota the day Klopp was leaving, because all of a sudden you went from a perfect career to now you don't know whether Alonso is going to like you, whether his team is going to like you. But still, they didn't let that get inside their head, and they said, you know what, focus. That's credit to them. आज मैं और शाहिद भाई बात कर रहे थे. मानस, तेरे को पता है लास्ट टाइम मोहम्मद साला started a game for Liverpool? Oh yeah, first Jan. 1st January. Unbelievable. 1st Wow. January. I saw a tweet. Yeah. ढाई And महीने. Jota, and I said Jota really deserves credit. उसने हमें मुश्किल time में does. Jota ने हमें he got us over the line. You know, listen, our injuries are crazy, by the way. We've had a lot of injuries, but the youngsters have been fantastic. You know, they've been fantastic. Kelleher last night, did you see? Achha, last night was so chaotic. Like, it was, वो तो कुछ समझ ही नहीं आ रही थी क्या हो रहा था. Ta. In the middle, one of the things that has gone unnoticed is the guy made like 4 or 5 world-class saves. Okay? 4 or 5 world-class saves. शायद भाई it has gone noticed. I think the world is noticing Kelleher और उसके जुल्फे are worth a lot of money. He's saving, like, and by the way, it was like the Matipon goal. Like, there was only one way that the goalkeeper was going to concede a goal. There had to be अपना बंदा ही करेगा तो करेगा पागलों की तरह, वरना नहीं होने था उसके ऊपर goal. But he was really good last night, Kelleher, and he's like, when he fell down and he grabbed his hip, oh my god, I was going to have a heart attack at that stage. Oh my god, not him. But I mean, like, you know, obviously we're all pretty upset because I personally think there's no way that Konate can start on Sunday. No chance. You know, I'm sorry. What? You no way. Ibu cannot start on Sunday. There's no way. He's unfit. Yeah, देखो मेरी बात सुनो. कुछ आपसे कोई पूछे, are you okay? आपने आगे से okay ही कहना है, और क्या कहना है आपने? आप मैनेजर को ये तो नहीं कहोगे मैं क्या? बाद में अगले दिन डॉक्टर जाके मैनेजर को बताता है कि यार नहीं यार, उसको थोड़ी सी स्ट्रेन हो गई है. वो obviously इब्बू ने तो उस टाइम पे क्लब को क्या कहना, ठीक हूँ, और क्या कहना उसने. लेकिन यार, the way he stopped, come on. शायद मैंने क्लॉप का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा और उससे बोला precautionary, and then he said that Ibu said I want to play. But क्लॉप ने बोला कि are you scared if you make a sprint कुछ हो सकता है. Ibu ने बोला कि I don't know but I want to play. भाई मेरे को ना अब मेडिकल टीम पे भरोसा है नहीं. प्रॉब्लम ये है. they messed up साला. Look, it has reached to a point where जैसे आप बोल रहे हो ना कल डॉक्टर बताएगा, अभी क्लॉप और प्लेयर्स को अपने डॉक्टर्स पे भरोसा नहीं. Look, मेरे अपने opinion में, I wish I'm the worst fool and I look like the stupidest person in the world, and I hope Ibu plays amazing. और कभी कभार ऐसा होता है, by the way, इन athletes की bodies का कुछ पता नहीं होता, ये कैसे react कर जाते हैं. कभी ये ठीक भी हो जाते हैं, बंदा कहते हैं यार अभी इसकी इतनी बड़ी चोट लगी थी, लेकिन कभी कभार they take some injections, by the way, and ये उसको थोड़ा सा mask कर देते हैं and they power through it. Now, if Liverpool are gonna like Thiago did in the Champions League final. Thiago pulled his hamstring against Wolves.
strained his hamstring against Wolves, and they still made him play the 70 minutes, but he didn't play as well as he could. Ibu might be able to get through the game, right? So I maybe he does, but the way that when you're running like that and you stop like that, वो 3 दिन में आपका muscle ठीक इतने heavy match के लिए नहीं होता. अब if he's, but you know, at the same time, I've been through the range of emotions overnight. So initially, I remember the mistake that basically you have to understand. I was at the stadium when Newcastle beat Liverpool 2-1. Leeds beat Liverpool 2-1 when they scored in the last minute, and they scored in the first minute when Joe Gomez played the back pass, and it ended up in the early goal. So I've seen Joe Gomez, who was, by the way, the center back when we won the league. I've seen him make a few errors. So initially I was like, Joe Gomez is not the best option as center back. But then I go back to 2019 and 2020, and he was amazing. So देखो, Kelleher, आपकी इंजरीज होती हैं, अब डिपेंड करता है ना. साला irreplaceable है, ठीक है. Szoboszlai replaceable है कर्टिस जोन्स से, लेकिन Szoboszlai और कर्टिस जोन्स मिलके irreplaceable हैं. एंडो मैकलिस्टर रिप्लेस कर सकते, लेकिन अगर दोनों इंजर हो जाएं तो उनकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है. Virgil irreplaceable है. It's fact. पहले हाफ में you saw what was happening to us. Virgil wasn't there and it was chaos. Acha, Robbo looked irreplaceable, but he was replaced by Gomez. Trent looked irreplaceable, but Bradley replaced him. Alisson looked irreplaceable, Kelleher replaced him. So we're going to have to find out on Sunday, if Ibu doesn't play, can Kwanzaa play in a top of the table match and perform at Ibu's level? And if he does, I'm sorry, but you just saved yourself £100 million. 100! Because agar Kwanzaa City के खिलाफ टॉप ऑफ द टेबल क्लैश में वर्ज के साथ खड़े होकर पक्का मैच खेल सकता है, तो फिर फ्रैंकली स्पीकिंग वो तो दुनिया के टॉप 10 सेंटर बैक्स में आ गया है. बट मेरे को क्या लगता है ना शायद भाई कि वो गोमेज को खिलाएगा. I think he will play because I understand what you're saying, Shahid bhai, and I totally agar Kwanzaa does it, I'll be the happiest person. But I think playing Kwanzaa and Bradley, wo right axis of our becomes very young. Okay. Yes. And against but he's in gamble. But he's in gamble mode. Manny, he's in gamble mode. रात को भी गैम्बल कर रहा था. अभी तो जो गोमेज भी गैम्बल ही है ना. नहीं, लेकिन वो कहता है, क्लॉप ने कहा भाई आर या पार, वो जगह उसका वो कहता है हार गए तो हार गए भाई. And that's why we're doing so well. Do you understand? Throwing 5 forwards on, sending everybody forward. हार गए Forrest से तो हार गए. Listen, when they were trying to pull the ball out of our area, Wanyi and Callum Hudson-Odoi, they were doing that because Verge was standing next to Nunez. Okay, and they're like, listen, we can win the match. There's nobody between us and the goal. So Liverpool are throwing everything at it. You watch it in a Pogniton attack karna City ko, and he could do some aggressive selections as well. Maybe he goes with Kwanzaa. Nidhi, who would you go for? Kwanzaa ya Joe Gomez partnering Van Dijk agar Konate is unavailable? That's a tough one. Joe Gomez. I personally will go with Joe Gomez. I'll go with Kwanzaa. I'll tell you why. Because that gives you the ability to bring Joe Gomez off the bench as a right back or a left back in case you need to shut the match down. Bringing Kwanzaa off the bench, he can only play center back. Between games bhi hum Joe Gomez ko left back, right back, DM sab. Joe Gomez has become our Milner now. Yes, true. You're right. Even between the game, you can switch him around. Yeah. But coming off the bench, who's going to be able to manage that emotion? Like Joe Gomez or Kwanzaa? I mean, we need some maturity. Maturity. देखो, guys, मैच 14 प्लेयर 15 प्लेयर ने जीतना है, 11 प्लेयरों ने मैच नहीं जीतना. मैच जीतना है कोडी गैक्पो ने, मैच जीतने हार्वी एलियट ने, इन लोगों ने ऑफ द बेंच आके मैच जिताना है. जो जिसका बेंच आएगा और इम्पैक्ट करेगा मैच को, वो मैच जीतेगा. So you need to have something on the bench that is able to come onto the pitch as well. I agree. But I get the feeling that this is the game where Nunez does something and the world notices. Last night, मेरे को ऐसा gut feeling है. मतलब रात को तो ऐसे लग रहा था मैं मार्को वैन बैस्टन को देख रहा हूँ. I swear. It's true, man. They were bangers. क्या बोल दिया आपने?
It was that. Listen, come on, that's like Marco van Basten, Fernando Torres finishes last night, guys. What are you talking about? That was amazing. हाँ, कल के finishes तो बहुत कड़क थे, especially his Oof. second goal. His second goal was very good. Yeah, he's looking really sharp, by the way. And Mo's there. I mean, we'll be ready for it. Baki, that's up to rest is up to fate. We have to wait and see how it goes. They're not that good, by the way. If Rashford can trouble them, so then come on. If Rashford agar head marta, so it could have been 2-0 if he headed the ball in the right direction. So City, I mean, they're a machine, all that. I get it. But Liverpool actually, this whole Ibu thing has not been great. But other than that, we kind of made it to the other end, guys. ठीक है, अगर हम गिनती करना शुरू कर दें, हमारे तो प्लेयर वापस आ गए. हमारे पास एंडो नहीं था, वो वापस आ गया. हमारे पास मैकैलिस्टर नहीं था, वो वापस आ गया. हमारे पास रॉबो नहीं था, वो वापस आ गया. हमारे पास नूनेज नहीं था, वो वापस आ गया. हमारे पास साला नहीं था, वो वापस आ गया. हमारे पास सोबोस्लाई नहीं था, वो वापस आ तो गए वापस. हमारे पास कौन नहीं है? जोन्स नहीं है, जोटा नहीं है. ठीक है, अब एलिसन एंड ट्रेंट नहीं है, लेकिन उनकी जगह प्लेयर हैं हमारे पास. Like Kelleher is doing the job, guys, and so's Bradley. And I know, I have to say that I'm not. Look, guys, you have to understand. A lot of the things I say doesn't mean I agree with what I'm saying. Okay, I'm just presenting the thoughts to you, the ideas. It's emotion. I get it. Yeah. Yeah. So look, what if Bradley is a better option in this match than Trent? What if maybe? Like he's going to lock it down better than Trent is. I can tell you that much. I've seen Trent be on his heels many a time against City when Sane or Foden coming down the left wing. आधे मैच तो खेलता नहीं था Trent. पिछले 2 मैच तो मिलनर खेला इसकी जगह. He's always injured for this game. So you're an upgrade. You're an upgrade right now. Bradley's amazing, guys. What are you talking about? When he scored the own goal, my daughter was like, "Oh, bichara Bradley, pareshan ho gaya hoga. He was flying high, and now he scored an own goal." I said, "Listen, don't worry about it. He can handle it. He's amazing, Bradley is." He has dealt he has dealt with far much more loss over the last 1 month. An own goal would make him feel so. And that was a proper right winger finish. Boom. But that was that's a good result for Liverpool, by the way, into the quarterfinals. It's a big result. It's a big result. हम लोग अभी rest कर सकते हैं अपने players को. अच्छा, वो इतनी बुरी टीम नहीं थी, by the way. Okay, उन्होंने पागल किया था हमारी डिफेंस को पहले आधे घंटे के लिए. Man, they were sharp and fast. Okay, I thought they were good. The scoreline flattered the performance. They were good. They were a good team. Endo looked really good last night. Endo's so good, man. Guys, I'm getting the feeling, Nidhi, I would start Elliot over Sabochala in midfield. I think Nidhi, मेरे को लग रहा है कि especially at Anfield, वो जो switch of play कर रहा है, Sabochala कितना fresh है मेरे को पता नहीं, Nidhi. But he misplaced some passes last night. Sabochala did, by the way. He looked a little rusty. He looked rusty, but I think the opposite with Harvey Elliott, not because उससे कल 3 assist, मैं वो सब बात नहीं कर रहा हूँ. I think Harvey Elliott has become, in a way, I'm not like for like, जो लाना था ना initial days Klopp के time में, मेरे को Harvey Elliott वो part of the system लग रहा है. I think Harvey Elliott just knows now when to press, when not to press, where to look at the play. उसका switch of play is very impressive. वो जो switch करता है ना, he's been really good this season, by the way. Really, he's one of the best when it comes to switching the play. And that is the pressing thing. By the way, he's running so much. His pressing, his quick passing. He's like a Foden light, if you know what I mean. Like he could be a Foden level of game in another couple of years, if you know what I mean. He's progressing. I'm a bit younger, usse. He's very young, Harvey Elliott is. I mean, this is the biggest compliment you can give to Pep Linders and the academy and whatever. Like, I am thinking कि यार हमें Elliott को खिलाना चाहिए over a 50-60 million pound signing. Like, not because the signing is bad. I think Elliott has just progressed so much. And playing at we got the player. Listen, we have enough to go up against them. Okay, now the crowd has to play its part, and the players have to execute. And we gotta get inside Pep's head, and I think we should go for the win. I would be very unsatisfied with a draw.
ठीक है, this league title race, जीतना पड़ेगा, जीतना हाँ, पड़ेगा. this league title race is, if you fall behind, you're dead. ठीक है, यहाँ पे these teams have the capability to win all their matches. We've been in this position before in which we drop points at even in February and then उसके बाद पकड़ा नहीं जाता. तो ये hard match final है. You have to play every match as if it's the last match of your life. And you might have to risk players getting injured. Again, they took a huge risk by not playing Salah against Nottingham Forest. Huge risk, okay? Because they basically wanted to protect him. But there's no protection against City, actually. You have to win this game, even though it's long. Like, traditionally, honestly, you would never think of 28th match of the season as a decider. It's not, to be honest with you. The 30 points to play for. This is only 3 points. But the rules of the game have really changed since Pep and Klopp came into the English Premier League. It's a complete different type of scenario. You know, I just don't see these teams taking points off of us. Look, Everton away, Man United away. These are our traditional rivals. But on paper, we're significantly better than both teams. Significantly better. A lot of things have to go wrong for us to not win those matches. I mean, get the feeling those are the matches we're scared of, right? And and then you look at Spurs at home. Spurs at home was always a tough match, but that was because of Harry Kane. Okay, he always performed really well against us. But no Harry Kane. Spurs at home. There's no guarantee that players and plus we owe them. So we'll be motivated. Villa away, they might have already qualified for the Champions League by then. It's the second last match of the season. So all of a sudden, you go through the next 3 or 4 matches, which are not even that difficult. You've got Brentford at home. I think you've got Sheffield United at home. Yeah, 3-4 matches knock off kar do. To phir to rahi 2 match game away to Everton, away Man United. They're like, and if you've got a 4-point cushion on City and Arsenal still have to go to Spurs, I mean, this is a critical game. शायद भाई इट्स अ मैसिव गेम बिकॉज अगर हम हाइपोथेटिकली सिटी को हरा दे 4 पॉइंट का डिफरेंस है आवर नेक्स्ट गेम इज ब्राइटन एट होम लीग में देयर नेक्स्ट गेम इज आर्सेनल सिटी का there you go. So I didn't even mention City versus Arsenal. You're right. Like within at the end of the month City could be 7 points behind Liverpool or they could be ahead of us by 3-4 points whatever. That's what I'm Don't say मैं that, सिर्फ hypothetically बोल रहा हूँ. So next 2 games, if City drop points in both the games, I think City are done then. Dude, they could have even dropped points against United, actually. I was a little disappointed. I understand that we thought that they wouldn't lose, that they would never lose. But the thing is, in the English league, used to be if you had a lead at halftime, or if you were losing at halftime, you're in big trouble. But now, because of the 5 substitutions and the long injury time, the chances of retracting a 1-goal deficit at halftime or late in the match it's changed. The culture or the rules of the game have changed. But back in the day, if you concede the first goal in these matches, you're in big trouble. And United had the 1-0 lead till middle of the second half. I mean, by that, if I'm losing 1-0 at the middle of the second half against a top 6 rival, I'm thinking, pehla goal khana, like, even though Liverpool recovered so many times this season, but I thought that United should have gotten something out of that match. I really wish they did. No, but Shahid bhai, to be fair, they scored 1 goal, but they were nowhere in the game. Yes, they got chances, but वो समझ आ रहा था कि City were very deserved winners in that game. हाँ, लेकिन देखिए मेरी बात सुने, कभी गोल नहीं भी निकलता ना, उसको बाजू लगा है मार्टिनेज, सॉरी, वॉकर का, और वो जमीन पे लेट गया. Oh, buddy, you're playing Manchester City. Even if you fall down, you got to get up and you got to sprint and you got to get back in position. You stop the attack. He's lying on the ground in the middle of the City half. उन्होंने जाके गोल कर दिया. I mean, ये क्या बकवास है? आपने अगर इतने chances उनको मिल रहे हैं, इतना वो आपको attack करें, तो you got to be on top of things. So United, if they had just hunkered down properly, they could have got something out of that. But वही तो missing है ना. That is the thing missing in this United team, na Shahid bhai. But I'll bring back to my original question, Shahid bhai, and we will discuss it quickly, and then we get to the game.
What did you think of Trent का statement and Haaland का statement? Do you think ये जबरदस्ती का थोड़ा मसाला ऐड किया जा रहा है? Or do you think Look, Trent's statement, I guess, was made in an interview, and I have no problem with either of the statements. Actually, to be honest with you, Haaland has a right to say what he wants to say. But if I were him, I would have ignored it, and I wouldn't have taken the bait, and I would have done my answering on the pitch. As far as Trent is concerned, I mean, he's giving an analysis of the whole body of work of Klopp's, and he has every right to say what he has to say. That it means a lot more to us the way that we did it, and that if City should not care, to be honest with you, how we feel about ourselves and how you feel about you can be mutually exclusive. So, but yeah. City, they have a problem with Liverpool. They have a mental block with Liverpool. Okay, like Forest do, by the way. Forest, I went there and I can't believe how they're still harping on about Brian Clough and the two in the European Cup win that they had, and how we were rivals back in the 80s. I mean, भाई 50 साल होने लगे, 45 साल हो गए, तुम अभी तक उस rivalry को push कर रहे हो. So that's why उन्होंने इतनी जान मारी हमारे खिलाफ, इतनी जान, because the crowd was pushing them, because they think that we're like traditional rivals from like some different age. City, basically, look, City can never be Liverpool. The legacy, the history, the dynamics, the connection with the crowd, and they want that. And Guardiola wants that, and City want that dominance, global dominance, and in people's hearts. And they wanted it from United, and they're getting it from United. So there's a slight obsession that they have with this. In my opinion, that might play into how the game is played tomorrow. But actually, the statements don't make that much of a difference. Game to feel me only enough. But they're jealous of us. और सर मैं क्या सोचता हूँ ना, शायद भाई, लाइक बहुत बार ट्रेंट ने बोला कि एनी कंपटीशन दैट सिटी एंटर दे आर द फेवरेट्स. बहुत बार हालैंड को पूछा व्हिच इज द टफेस्ट सेंटर बैक यू प्लेड अगेंस्ट, उससे वैन डाइक बोला. सो ऐसा कुछ what happens, ट्रेंट का एक कोट ले लिया, डाल दिया, and in an interview Haaland was not expecting that question and like he answered the way he did. So मतलब I think दोनों अपने they're fair in what they're saying. But what you just mentioned is a very important point, though, because we sometimes we treat the Carabao Cup and the FA Cup as junior cups. But when City make it are in these cups, then winning them is like winning the Champions League. I know that sounds crazy. लेकिन City को किसी भी competition में हराना, you're basically trying to beat the best team in the world, which is trying to win that competition. It's not a joke. City is amazing. City's team is absolutely amazing. There is no denying that. And beating them is like... I have to say, like, even though I like to call him Fraudiola and all that other stuff, and, any checkbook manager and all that, and I do believe that. But at the same time, to get a Kanji playing at that level, that is bloody impressive. What is that guy, the Dutch guy, यार, जो left back? Nathan Ake को तो मैं मजाक उड़ाता था आके का, जब वो बोर्नमथ में होता था. मैं कहता था साला ने तो उसको मार देना है, ये क्या नकली वैन डाइक आ गया, ये कौन है? Ake playing at that level consistently again and again, to get Walker to maintain that level, by the way, for him to not drop off, even though he's in his mid-30s, he elevated Foden. Foden is not a world star, okay? Foden is a local creation, by the way. Okay? He made sure Haaland got as many goals as he could. He's got Guardiola playing left back at the same time. So I have to say, after all the criticism I've made of him, some of his body of work has been quite impressive, even though he's got the most money. That does not necessarily mean everything. I don't agree 100% with what I'm saying, because I don't like him. Actually, I think he's checkbook manager. But if you look, somebody pointed out to me, look at Chelsea. They have all the players in the world. They have all the money in the world, but they haven't been able to run themselves properly. Yay, Chelsea, tum Guardiola ko de do. It'd be a big difference. I think what Pep does so well ना, शायद भाई, जैसे अपना कांजी का नाम लिया, अपने आके का नाम लिया, he has that ability to demand perfection 200% every game.
You look at Jack Grealish. मतलब last season he was so good. अभी suddenly Jack Grealish, मतलब like he has to do something to get back into the team. I know फिलहाल injured है. No, but You he's look got at he has the guts to make the big call, big Guardiola. calls. Calvin Yeah. Phillips को बोल दिया भाई तू 1.5 किलो overweight है, and then Mm. it is what it is. He is not shy of making big calls. आपने जैसे बोला, and he just One of my demands. life's regrets will be that Guardiola saw off Klopp and Klopp didn't see off Guardiola. I was convinced that Klopp would see off Guardiola. यही Guardiola 2 हफ्ते पहले कह देता कि मैं सीजन के एंड पे छोड़ता हूं, तो क्लॉप ने 5 साल की एक्सटेंशन कर देनी थी. ये Guardiola ने क्लॉप को थका दिया. पहले उसने जर्मनी में उसको थकाया, अब उसने यहाँ पे थकाया. पैसों के साथ, पैसों के बगैर नहीं, पैसों के साथ. लेकिन I honestly, I would have wished that we had seen him off. But that's the way it is. Look, we got to put all that energy, all that effort, all those vibes, all those prayers, and all that mojo tomorrow, day after tomorrow, into Sunday. That Sunday is our Waterloo. Sunday is gonna be. आप अगर लिवरपूल का मैच ज्यादा नहीं देखते हो, जो चैट आई एम श्योर देखते हैं लोग, बट दैट गेम आप सुकून से बैठ के देखना, वॉल्यूम अप करके, लिसन टू एवरीथिंग. शाहिद भाई इज गोना बी एट एनफील्ड एज वेल, which is Inshallah. huge for that game. And I mean, Shahid bhai, I don't usually get jealous of people because I feel I'm blessed to do what I do for a living. Yes, you are, by the But way. I am blessed. But Shahid bhai, you are gonna watch probably, okay, I could be wrong, guys. You can correct me. The most emotional game at Anfield after Look, Barcelona under Jurgen Klopp. I did not watch the Barcelona game, but you have to understand that I've been at this a long time, and I make all my sacrifices on the other aspects of my life so I can tune out and get the most out of this passion and this connection that I have with my football team. And just for the record, I was in Istanbul as well. Okay, so that, like, No, I've been Shahid to bhai, of course. I'm I've been not to saying many, you're lucky. you know. I'm not saying you're lucky. You have earned everything. You have No, every no, no. right to. I'm just saying कि मैंने काफी बड़े games देखे हैं, and I did not want to miss this one because it, like I was mentioning before we got online, it coincided with my daughter's school break, so I could actually leave as well. So I've just, and plus he's leaving now, so we don't know what's coming around the corner. I personally think it's going to be it's going to be Shankly Paisley transition. We have to. This is what I'm thinking. They might just be that. Sorry to interrupt. But we don't know. Sorry Go to ahead. interrupt. सॉरी टू इंटरप्ट शाहिद भाई. एक चीज अनुभव कोनवार, मैं तुमको एक चीज बोल रहा हूँ. यू विश you fucking wish. First of all, it's not Chanel, it's a channel. So Chanel, he's Double N. Fucking wish. He's done a typo. पॉकेट में लेके घूमता हूँ मैं तेरे से लौंडों को, समझ गया? चैनल No. तो आया क्यों है भाई फिर हमारे चैनल पे? like Channel. What's wrong with the channel, man? Channel's amazing. Like Shahid bhai, like I personally feel the atmosphere is gonna be insane. Crazy, guys. वो वैसे ही बड़ा crazy है atmosphere आजकल उस stand की वजह से. मैं कह रहा हूँ ना. And Klopp जा रहा है, and then the city match, Salah back. Ooh, it's gonna be amazing. What's the prediction, guys? बताओ. I am going for 2-1 Liverpool. 2-1, huh? Darwin Nunez 86th minute. निधि बोलो. निधि नहीं देता prediction. निधि देता है मैं देता हूँ. No, I think I'm gonna go for but I'll say 3-0. I'm going 3-0 Liverpool. Liverpool. Say one thing. 3-0 Liverpool शायद भाई. Yes, 3-0. 3-0. Wow. Yes. तीसरा गोल वो जंक में होएगा ना, वो एंड पे होएगा. But I'll say one thing. ये मैच में शुरू के 15 मिनट में there is going to be a massive fight. मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है ऑन फील्ड इंसिडेंट होने वाला है. मेरे को सॉलिड फीलिंग है कि शुरू के 15 मिनट में होने वाला है वो. Okay, we'll see. Solid. We'll see. मतलब we'll see. I Pep versus Klopp भी है भाई, potentially for the last time. Okay. But
keep in mind, we're playing with the house's money. I'm sorry I'm interrupting you, Manny, but I want to make a point uh, that it's relevant to all of us, and even the people who are going to come on Twitter after the match, and even the one, and make comments about everything. Guys, look where we were a year ago, and understand this is not supposed to happen. So जो भी हुआ है ना अभी तक, it's amazing. The team has done incredible. They came from nowhere and they're top of the table. मुझे तो अभी भी table देख के समझ नहीं आती. Do you understand हमारी कितनी बुरी हालत थी last season? Okay, like this is one of the all-time great transformations, and these guys have shown a lot of heart and a lot of guts. And look, you have to understand, it's match में बड़ा कुछ होता है, but these guys are giving it everything. So we got to support them, and if we give that positivity before the match, we have to give it after the match, because we should not give up no matter what. Go ahead, man. Sorry about interrupting. And we won't give up. I know we will give it our all. If it is not enough, it is not enough. But मैं तो sure हूँ कि fans and our team will do everything for because guys, पर 1 मानस मैं एक point चीज बोलूं तेरे को यार, एक ब्रो, पॉइंट से निधि हम लोग 2 बार हार रहे हैं लीग इनके अगेंस्ट Yeah, लास्ट no, डे man, पे. it's too much. दिल ब्रो, टूटा है, बहुत दिल टूटा है, बहुत दिल टूटा है. मैं दिस तेरे इज को आवर मैं तेरे मोमेंट को टू एक सेकंड निधि. I really hope that we like the farewell has a happy ending when we win the title, because we have not saying suffered, because listen, in the grand scheme of things guys, we are absolutely blessed to support Liverpool. हम जीते हैं, हमने लीग देखा है, हमने चैंपियंस लीग विंस देखी हैं, बट ये 2 बार लास्ट डे पे हारना विद दोस नंबर ऑफ पॉइंट्स क्या स्टिल दुनिया है यार, जो चीटिंग करते हैं, जिनके पास पैसा है वो जीत जाते हैं, जो असल तरीके से काम करते हैं, जो जज्बात देते हैं, जो कॉमन मैन को सपोर्ट करते हैं, लाइक अ गाय लाइक क्लॉप, वो हार जाता है. ये क्या दुनिया है भाई, उल्टी गंगा बह रही है. ठीक है, बाय द वे, वेरी मैं फेवरेट लाइन इन पाकिस्तान, बाय द वे, दे लव उल्टी यूजिंग गंगा, उल्टी गंगा बह रही है. हाँ वो ओके, तो हम लोग भी it's बोलते very हैं. मैं popular here. I'm just telling you, okay? So the thing is, what's going on in this world, man? Where is the justice? Where is the fairness and fate? Okay? Like when Ibu pulled up with the hamstring or whatever he did last night, I'm thinking to myself, हमेशा हमारे player, इन्होंने एक बार पहले मैच खेले, इनके बंद, अच्छा by the way, नूनेस की उंगली को चोट लगी है, लेकिन इनके प्लेयरों को क्यों नहीं लगती? ये क्या हो क्या रहा है? Look, guys, we deserve this, and we have to believe. we have to win. निधि you're on mute. निधि you're on mute. मैं एक चीज बोलूं, ये पूरे डिस्कशन में ना एक चीज, एंड we've been guilty of this so many times. ये पूरे डिस्कशन में लिवरपूल का इमोशन, क्लॉप का इमोशन, राइट, क्लॉप का लास्ट सीजन, ये सारी चीजें, पेप के टैक्टिक्स, यार मतलब क्लॉप क्या बिना टैक्टिक्स के क्या इतना बड़ा मैनेजर बन गया है क्या? मतलब आई रियली हेट इट व्हेन पीपल डू नॉट समझते नहीं है कि, और जब वो एकदम डिस्क्रेडिट कर कि लिवरपूल तो जीत सकता है तो सिर्फ इमोशन पे जीत सकता है. नहीं भाई, क्लॉप इज अ मास्टर टैक्टिशियन. कहाँ हो भाई तुम? मतलब अगर तुमको लग रहा है कि क्लॉप सिर्फ हग्स दे के और मोटिवेशनल, मतलब वो स्पीकर बन के जिता रहा है, वो एनी गिवन संडे का अल पचिनो नहीं है भाई. वो मतलब ही इज बीन इन मैनेजमेंट, ही इज डन इट. डॉर्टमंड उसके जाने के बाद आज तक लीग नहीं जीत पाया. इस जैसा So मैनेजर this is, दोबारा नहीं आने वाला, मैं अभी बता देता हूँ. मैंने बड़े देखे हैं, ठीक है, इस and तरह का I'll tell you मैनेजर something, and दोबारा I'll नहीं tell you आएगा. something. So many people dissed Klopp कि इसको कैसे ग्रेट्स के गिनती में गिन रहे हो, इसने ये नहीं पागल किया, वो नहीं बकवास किया. करते हैं. The day he announced his departure ना, मेरे को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, प्रूफ में दिख गया था. सबको चाहिए था, और आज भी चाहिए, और आज भी चाहिए, नो मैटर व्हाट यू टेल योरसेल्फ. हम भटकते रहेंगे, ढूंढते रहेंगे, मैं दोबारा क्लॉप जैसा बंदा नहीं मिलेगा. ओके, ये एक ही बार जिंदगी में आता है. इस क्लॉप इज लाइक अ मदर, एक ही होती है. अलोंसो विल विन चैंपियनशिप्स, लेकिन वो हमारे बच्चों के बच्चे या हमारे बच्चों के को पसंद आएगा.
At the age and the connection we have with Klopp, there will never be another Klopp, honestly, and he deserves it more than anything. And we have gotten not a single decision from the proper decision from this PGMOL in his entire reign. Okay, really, he has gone against these referees for whatever reason. I don't know why they don't like him, TK, but basically, we have to go against that as well. So he obviously, I don't know why, because everybody else likes him, but the PGML is always going out of its way to screw Klopp over. Now let's give a perfect, simple example. The free kick that was given against Virgil van Dijk, the very next week, United did the same thing against, I think it was Forest in the FA Cup. And that was not given as a free kick. But when Virgil scored the goal, it was given as a free kick. तो उन्होंने तो अपनी पूरी जान मारी कि इस तरीके से इनको जीतने नहीं देना. I'm sorry, Matt. You know what my beliefs are about conspiracy theories, and everybody makes fun of me, everybody laughs at me and thinks I'm cuckoo. Go ahead. You can think I'm cuckoo all you want, लेकिन अब जो मैंने पिछली बार जब मैं स्क्रीन पे आया था और अब के दरमियान में मुझे भी जरा बता दो, have I been wrong or have I been right? Listen, the drop ball incident. Everybody chill out. He had done the same drop ball mistake earlier against Liverpool as well. So chill out. 56 minutes. Exactly yes, and it proves what we've been saying all along, that he is a terrible referee. Okay, we've been saying this all along. And furthermore, they're like, oh, they played over a minute over. They spent half the time wasting their time. Okay, so I don't think that was anything above and beyond normal refereeing, and in my opinion. And City have gotten all the calls, all the way back to when Haaland was called for a penalty against them for no reason whatsoever. And even now, when Rashford went down, ye City ka player down jata, to it would be different. The only thing is, the only call that City didn't get was the Haaland breaking through against Spurs. And that too, I think the referee got confused. वरना उसको ये कहा तो यही गया है कि तूने ये whistle नहीं बजानी, गलती से उसने whistle बजा दी थी. मेरे opinion में Klopp has been done a massive disservice by these referees, and history will dictate that. You'll see कि यहाँ पे ऐसे calls हमारे खिलाफ इस season में गए, but we're still there, we're still standing. Just win, yaar. Just win on Sunday. Just win on Sunday. So you take all the risk. If Liverpool has to win the Premier League, no matter what, you guys have to beat City. Take all the risk in the world, but give everything and beat them. Yes, Aditya, we have to beat them to win the league for sure. Can I say something though? This season might be slightly different. I'm trying to give all the angles because Arsenal are with us and two teams are chasing them now. I feel more comfortable actually. A lot of people will be like, I hope Arsenal fall away. I hope Arsenal fall away. Listen, we've gone up against them alone, right? Like, it's not that easy to go up against them alone. But if they're being chased by two different teams at the same time, the pressure gets cranked up just a little bit. And I think that you might see City drop some points. Like you said, they have Arsenal. Then I think they have another tough match soon after that as well. Villa, I think. Villa I'm not so sure that City are going to go all the way to, I think it's 95 points they can get right now. I don't think they get to 95. I don't think they get to 80. I think they get to like 85. I can, especially if Arsenal keep winning. What happens in these title races is it's not just this team beat this team. It's this team's opponent lost. The team went into the match with more confidence and then won the match. Its opponent won. They went in the match with a little bit more desperation and then drew the match. So the result that the other team has massively impacts your own result. It does. It's not like, oh, 11 ने 11 के खिलाफ खेलना, वो baggage mental लेके जाती है team अपने साथ अगले match के अंदर. And I've done some analysis. We are playing before them quite a lot in the next 6 weeks.
So that is always an advantage. If you can go in, win your game, and then the other team has to play to catch up, वो थोड़ा pressure ज़्यादा होता है क्योंकि points on the board होते हैं, and दूसरी team ने जीत लिया होता है, आपके ऊपर full pressure होता है कि आपने जीतना है, you have no chance, no margin of error. If you play first, you don't know what the other team's going to do. You might have a margin of error. Shahid bhai, Arsenal play on Saturday, so this game technically is 2 versus 3 when it kicks off. Liverpool versus City. You say if Arsenal win, Arsenal are 1 point clear of us. So unless again, Ivan Toney has something to say about that, by the way. Yeah, मतलब वो खुद पे ही सट्टा लगा देगा शायद से. But the point is that अगर Arsenal win, this becomes 2v3. So the pressure is different. I agree. If you play earlier, it's an advantage. It's an advantage. And if there are two teams, if there's a 3-horse race, then you can't just fixate on one team's result. The other team's result is also there. So, like I said, your emotions are going through a lot of different things. Like, for example, हमने क्या कहा जब we scored against Forest, हमने तो एक ही बात की ना, Pep की माँ मर गई, Pep तो मर गया होगा, Pep तो ज़मीन पे लेट गया होगा. Obviously, because you would feel that, right? When they like, I still can't forget the Oscar Bob goal against Newcastle. Okay, I still can't. I'm like, yaar, I wish that didn't happen. Okay, I wish that didn't happen. शायद dropped off. I think call आ गया रहेगा उनको. Aditya Singh Pep is always hesitant to take risks since his Barca days when he faces his challenger in the league. Post-March, Liverpool has to do what Real did in 2012. Okay, यार. Thanks for the contribution, Aditya. बहुत पुरानी बात है यार, मतलब वो तो है. In principle, I agree with that emotion, but मतलब यार ये तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको टाइटल जीतना है ना अगेंस्ट पेप गार्डियोला सिटी, आपको घर पे उनको हराना पड़ेगा. You cannot not beat City at your home. आर्सेनल का इस सीजन जो पोजीशन में वो है ना, जो हम बोल रहे हैं कि अगर हमने ड्रॉ कर लिया तो आर्सेनल सबसे ज्यादा खुश हो जाएंगे, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि उन्होंने एमिरेट्स में सिटी को हरा दिया. सो और हम जब 1 पॉइंट से लीग हारे हैं ना, आप देख लो हमने सिटी को हराया नहीं एनफील्ड पे. अगर आपको सिटी से लीग जीतनी है तो आपको अपने होम पे एटलीस्ट सिटी को हराना ही पड़ेगा. 100%. और देखो जब हमने जीता लीग तो हमने सिटी को हराया था होम पे. 100%. We have to और beat इस बार आर्सेनल के अगेंस्ट हमने सिर्फ 1 पॉइंट लिया आउट ऑफ 6. But we're above them but we're still above them in the table, so we can put that as water underneath the bridge, right? No, but I agree शायद, but what I'm agreeing with you and Nidhi. मेरे को लग रहा है कि आपको राइवल को जीतने के लिए लीग एक बार हराना पड़ेगा, मतलब अगर 3-horse race है. It's going to be very difficult for you to win the league if you only take 3 points out of 12, 3, 6, 9, 12, 3 points out of 12. Against City and Arsenal. I mean, come on, you're dropping 9 points. Arsenal के साथ we have missed our chance. United के साथ home पे we have missed our chance. चलो चेल्सी को हरा दिया. Spurs के साथ वो तो चलो उस मैच की तो मेरे को बात वो भी उसकी, और मतलब वो अवे मैच की तो मेरे को बात ही नहीं करनी है, राइट? आपको ये सब मैचेस को हराना पड़ेगा भाई. ये सब you have to win these. Everybody knows that. You have to everybody knows that. I don't think either team is going to settle for a draw. Like मेरे यहाँ से bet लगती है no draw की bet लगती है, क्योंकि दोनों टीमों में 1 point को लेके हमने क्या करना है, right? So in my opinion, I think both teams are going to go for the win, full out. That would be the smart thing for them to do. Look, those guys are beating teams 5-0. You really want to let them go top of the table, huh? What if they win every match? Okay, you are in control of your own destiny. You have to keep your destiny in your own hands. Now, I understand you have a lot of injuries and you just played on Thursday, but this is the way it is. You want to win the league, you got to win every game. You got to run the table. It's as simple as that. That is the body of work that you have to create. That is the standard that is required. And unfortunately, there's no margin of error. Okay, no margin of error. And if Pep thinks he's going to take a point and go back, and then he has to play Arsenal again the next week, and if he thinks he's going to take a point from that, and he's going to win the league, well, I'm sorry, we're very deep into the season now. 6-7 match रह गए इसके बाद, इन 2-3 मैचों के बाद. I would not take my chances. If I were City,
I would go all out, and that plays into Liverpool's favor as well. It's all about execution, yaar. Who's going to take the chances? Who's going to not make the errors? Who's going to defend better? ठीक है, जोर की टीम है, वो तो डिपेंड करता है right time पे कौन क्या करता है. लेकिन we deserve luck, yaar. First, all the way back to that Mane red card against Ederson. मैं तो मानता ही नहीं उस red card को. ठीक है, मैं नहीं मानता. वो साइड पकड़ के बैठ गया, ये है वो है. अगर इतनी जोर की सर में लगी थी तो सब क्यों नहीं हुआ? And then you go back to the Fabinho miss that Rodri slid in and intercept. I was at that match. Oh my God, yaar. Imagine if Fabinho had put that in the last minute of the match. What that would have meant for that season, the explosion. That was so unlucky. The margins are so fine in this rivalry and in this league race. They're so fine that it's just, you have to execute your game plan. Like Nidhi said, the game plan he gives you, you got to execute it like robots. You got to do it carefully. Guys, But- if we win the game, I think we win the league. I mean, there's still a long way to go. I mean, there's still a long way to go. I wouldn't say that. I wouldn't say नहीं that. नहीं, I'm making a prediction. मैं ये समझ गया. I understand what you're saying, देने but वाला I है mean, ये. मैं सिर्फ बता but I रहा हूँ mean, कि मेरे को लगता है कि अगर हम सिटी को हरा दे तो हम लीग जीत जाएंगे. you have to be very उसके careful, बाद यार. ये एक हफ्ते में गेम आउट हो सकती है किसी भी टीम की. बड़ा ध्यान से चलना पड़ेगा. अब उसके बाद भी चलना पड़ेगा ध्यान से. और अगर सिटी जीत गया, सिटी इज विनिंग द लीग. इट्स एज सिंपल एज दैट. मेरे को ये इट हैज कम डाउन टू दिस बॉक्सिंग मैच एंड विनर टेक्स ऑल. और अगर ये स्टेलमेट खत्म हुआ तो शायद से आज तक लीग जीत जाएगा. Like it is that close. It is that close. He deserves 2 league titles. He lost 2 by 1 point. When he leaves us, he deserves 2 league titles, along with everything else that he's going to have. He deserves it. So just pray and put everything into it, guys. Okay, I gotta go now. Okay. No problem. No problem, Shahid bhai. Thank you so much. Good to talk to you. Thank you so much for your time. Thank you. Anytime. Thank you so much. Sorry, I wasn't able to crack more jokes, but I'm so tense about Sunday, so I could just throw myself at you. Bye. Follow Shahid bhai on Twitter. He will be obviously at the game. I'm sure content आपको बहुत मिलेगा. Please follow Shahid bhai on Twitter, Okay, everyone. I'll try to post some stuff. See you guys. Bye. See you Shahid bhai. Bye-bye. Bye. मजा आया यार. मजा आया Shahid यार bhai. क्या प्रेडिक्शन है? तूने तो 2-1 बोला, शाहिद भाई ने 3-0 बोल दिया. चैट का क्या प्रेडिक्शन है? एंड देन आज लिवरपूल सिटी की पहले ही बात कर ली हमने. चैट का क्या प्रेडिक्शन है? चैट तो सिटी लिख रहा है ऑफ कोर्स. तो वही लिखेंगे. देन वी मूव ऑन टू द अदर गेम्स. बाकी दूसरे गेम्स का भी प्रेडिक्शन कर लेते हैं. 4-2 टू हु? पता नहीं भाई, ये नहीं लिखा है. 2-2 ड्रॉ, 2-0 लिवरपूल सिटी क्लोज विन, 2-2 ड्रॉ बीजीएमआई वर्सेस 2-1 पता नहीं किसको, 3-1 लिवरपूल, 2-2 4-3 सिटी, 2-1 सिटी, 3-2 लिवरपूल, 1-0 रॉड्री लिवरपूल विद वैन डाइक विनर. काफी सारे प्रेडिक्शंस हैं. मतलब इट्स प्रेडिक्शंस के मामले में तो चैट 50-50 है. It's proper 50-50 predictions के मामले में. बहुत टेंस गेम है यार. I have not been this tense about a game 2 days before भाई. भाई बहुत स्ट्रेस है गेम का. बहुत स्ट्रेस है. बहुत स्ट्रेस है. एंड भाई क्या एटमॉस्फेयर होगा यार. मतलब शिट. It is a game for someone to become a cult hero for City या Liverpool. It is one of those games यार. मतलब अगर आपने जिता दिया, लोग बात करेंगे लाइक आगे जाकर, याद है वो गेम में उससे वो किया था जब इतना, वैसा वाला फीलिंग है. और मेरे को पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही है गेम में नूनेस का गेम होगा वैसे. राघव सेज मेरी बंदी अर्शिया का बर्थडे, सारे हैप्पी बर्थडे बोल दो. यार हैप्पी बर्थडे. अगर आप सही नाम यूज कर रहे हो तो मत करो. आई वुड एडवाइज अगेंस्ट यूजिंग योर लव्ड वंस का नेम ऑन द इंटरनेट. अगर आप सच में नाम यूज कर रहे हो तो. बट हैप्पी बर्थडे टू योर गर्लफ्रेंड, बट डोंट डू दैट. जस्ट सही. चलो अभी बाकी मैचेस की बात करते हैं. या फटाक से ले लेते निधि सबका प्रेडिक्शन.
चलो, मैन यूनाइटेड वर्सेस एवर्टन, क्या बोलता है? यूनाइटेड विन, आई थिंक यूनाइटेड जीत जाएगा। हाँ, एवर्टन आर स्ट्रगलिंग वेरी बैडली, तो एवर्टन का प्रॉब्लम, हालांकि उनको थोड़ा एक शॉट इन द आर्म मिल गया उनको, कि उनका 6 पॉइंट्स का ये हो गया है, तो आई थिंक 2-1 यूनाइटेड। आई एम गोइंग फॉर 1-0 यूनाइटेड। I think they'll concede, but they can score. So 2-1 United is what I'm going for. Bournemouth Sheffield straightforward है भाई, Bournemouth win. इसमें बॉर्नमouth ज्यादा होम विन। डिस्कस, हाँ 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 हाँ. Palace Luton, as much as I पैलेस। want Luton to win, Palace, मतलब Luton पैलेस। unfortunately वो एवर्टन का जो पॉइंट उनको 4 पॉइंट मिल गए उसकी वजह से मेरे को लगता है Luton नीचे जा रहा है. सब लोग यूनाइटेड विन ही बोल. 4-0 3 का मुझे नहीं पता यार. 2-1 यूनाइटेड, हाँ. 3-2 आई डोंट नो यार. 1-1 फुल गुंडागर्दी. पैलेस लूटन, आई थिंक पैलेस जीत जाएगा ब्रो. दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड. Wolves या versus Fulham is a good game. Wolves versus Fulham is a good game, भाई. Wolves away is not an easy place. आई बट आई थिंक Wolves- वुल्व्स जीत जाएगा। नहीं, एक्चुअली ड्रॉ लग रहा है मेरे को ये। सडनली बोलते बोलते मेरे को I ड्रॉ वाली चीज। मैं भी मेरे को भी ड्रॉ, मैं आई विल आल्सो गो फॉर अ ड्रॉ. आई थिंक Wolves Fulham ड्रॉ हो जाएगा ब्रो. दिस इज अ आई प्रॉपर ड्रॉ गेम. आई एम गोइंग फॉर अ ड्रॉ एज वेल। आई थिंक ये 1-1 टाइप गेम, अ लॉट ऑफ प्रॉमिस, अ लॉट ऑफ हाइप, बट मेरे को लग रहा है कि गलीज गेम होगा एकदम, 1-1 टाइप खत्म होगा। हाँ, क्योंकि यार फुलम, वैसे तो फुलम स्ट्रगल करता है गोल गोल करने के लिए. उनका मतलब दे आर नॉट वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ फिनिशिंग, बट आई थिंक दिस विल बी अ ड्रॉ. फुलम 3-1. तेरे लिए सुपर चैट है. Happy birthday, Raghav. Thank you so much for the contribution. Happy birthday to your loved one. आर्सेनल ब्रेंटफोर्ड अगेन वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिग विन फॉर आर्सेनल. ये तो फिर से 3-0 4-0 होगा. भाई आर्सेनल क्या ब्रेंट खेल रहा है यार। एट होम आर्सेनल, आई डोंट सी एनीथिंग एल्स. दिस इज अ वेरी, एकदम सिंपल गेम है यार ये. स्ट्रेट ये फॉरवर्ड, आई एकदम. थिंक आर्सेनल 3 गोल से जीतेगा। आर्सेनल जैसे खेल रहा है ब्रदर, एंड आर्सेनल का पोर्टो भी आ रहा है, दे वुड वांट टू गेट द जॉब डन अर्ली। आई एम गोइंग फॉर अ 4-1 या 3-0 आर्सेनल विन। हाँ, ये तो सिंपल है. एस्टन विला वर्सेस स्पर्स, ये भाई स्पर्स का अचानक से मतलब मामला थोड़ा फंस गया है. ये देखिए यहाँ पे हैं स्पर्स, मतलब दे स्टिल नॉट कंप्लीटली आउट ऑफ इट, बट 5 पॉइंट, मतलब दे, अगर इफ दे विन दिस दे गेट विद इन 3 पॉइंट्स ऑफ विला, 2 पॉइंट्स ऑफ विला, सॉरी. एंड दे हैव अ बट गेम इन हैंड। एंड वही तो बोल रहा हूँ, इफ दे विन दिस दे गेट विद इन, गेम्स इक्वल हो जाएंगे, एंड दे मतलब और उनके साथ ही मैच है. So this is a big game for Spurs और स्पर्स के लिए Villa wouldn't ये इनका Villa चैंपियंस लीग wouldn't mind. क्वालिफायर है। हाँ, Villa wouldn't mind a draw in this one. Villa को या draw विला, चलेगा इसमें. या विला के लिए परफेक्ट होगा यार। मैं तो चाहता हूँ निधि विला जीत जाए, क्योंकि क्योंकि when we play Villa later, I don't want them to be involved in that race where they are desperate to get into the top 4 और मारा मारी हो। तो मैं चाहता हूँ विला जीते, बट ये दिस इज अ वेरी टफ वन टू कॉल। स्पर्स अवे फ्रॉम होम, विला अटैक करेगा, स्पेस मिलेगा सॉन वॉन को, कुलुसेव्स्की को। तो आई आई सी यार, एक एक चीज मेरे को लग रहा है गेम में, अटैकर्स तो बहुत अच्छे हैं। वॉटकिंस मेरे को गोल्स दिख रहे हैं मैच में। आई एम गोइंग फॉर, आई डोंट नो द प्रिडिक्शन, बट ये गेम में कम से कम 4 गोल होने वाला है, मैं ये बोल रहा हूँ। 3-2 Spurs is my prediction. 3-2 Spurs, wow. I think 3-2 Spurs. Wow. I have a feeling ये match. ब्राइटन वर्सेस फॉरेस्ट क्विकली ले लेता है। आई एम गोइंग फॉर ब्राइटन। ब्राइटन भी हारा गंदा ना, बट एंड ब्राइटन का वही है ना ब्रो, ब्राइटन का वही है ना कि डिजर्बी जब हारता है ना तो वो गंदा ही हारता है. वो एवर्टन से 5-2 हारा है, लूटन से 4-0 हारा है कल. रोमा तो खैर बहुत सी टीम है, बट वो जब हारता है तो वो गंदा ही हारता है ब्राइटन. दिस इज ब्राइटन एट होम, आई विल गो फॉर अ ब्राइटन विन. आई एम गोइंग फॉर अ ड्रॉ हियर वैसे, क्योंकि आई थिंक थके रहेंगे वो हमारी तरह एक्चुअली।
एंड फॉरेस्ट यार लास्ट 2 मैच जो यूनाइटेड से एंड में हारे, फिर हमारे अगेंस्ट एकदम एंड में हारे, ठीक ठाक खेल रहे थे, सो दैट इज व्हाई आई एम गोइंग फॉर अ ड्रॉ हियर. वेस्ट हैम वर्सेस बर्नली वेरी क्विकली. मैं वेस्ट हैम विन है, इसमें तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है. लिवरपूल सिटी तो हो हमने गया. बहुत टाइम स्पेंड कर लिया. चेल्सी न्यूकासल ने दी. देख आई थिंक चेल्सी ने स्ट्रगल किया, वो ब्रेंटफोर्ड वाला चल डिसासी लास्ट मिनट गोल मार के इक्वलाइज कर दिया. चेल्सी हैव हैड देयर लॉट ऑफ, मतलब यहाँ पे चेल्सी को जीतना ही पड़ेगा भाई. उनको कोई भी होप है ना ये सीजन का, अगर कुछ भी अगर उनको करना है तो ये भैया ये इनको मतलब जीतना ही पड़ेगा. सो आई विल गो फॉर अ 1-0 सिटी विन यार. न्यूकासल के भी इंजरी इश्यूज बहुत हैं, बहुत तकलीफ है उनको भी. इट्स नॉट लाइक न्यूकासल हैव इट एनी इजी. न्यूकासल आल्सो आर स्ट्रगलिंग क्वाइट अ बिट. या आई एम आल्सो गोइंग फॉर चेल्सी विन. बाबा के साथ हम बात कर रहे थे कि अभी भी एक पॉसिबिलिटी है कि ये लोग 7th वेंथ आ सकते हैं. इतना एफए बड़ा कप में गैप अच्छा नहीं है. रन हो सकता है. एफए कप में अच्छा एफ रन हो सकता है. अगर लेस्टर को हरा दिया वापस दे गोइंग टू वेम्बली. सेमीफाइनल्स तो वेम्बली में होता है, तो ऑल इज नॉट अच्छा ये लॉस्ट. क्वार्टर्स है ना, ये क्वार्टर्स है हाँ ना. हाँ. हाँ, भाई भाई भाई. सो एंड दे प्ले लेस्टर एट होम. सो मतलब आई थिंक वो पहुंच जाएंगे सेमीफाइनल वापस. आई थिंक जीत जाएगा चेल्सी दिस गेम. इनफ इन द टैंक टू बीट न्यूकासल, जो बहुत स्ट्रगल कर रहा है. अगर ये न्यूकासल लास्ट सीजन वाली टीम होती तो फिर मैं बोलता बहुत डाइसी होगा मामला, बट मैं चेल्सी विन के लिए जा रहा हूँ. Yeah, 1-0 according to me. I think 1-0. ये बट मतलब तेरे को पता है, मैं तेरे को एक चीज बोलूं टुवर्ड्स जस्ट द एंड ऑफ द पॉडकास्ट. हाँ. आई थिंक जो तू बोल रहा है ना कि संडे को इट विल मतलब डिसाइड हो जाएगा टाइटल. मेरे हाँ. को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि संडे को जो भी हो देयर आर मोर ट्विस्ट्स एंड टर्न्स. मतलब ऐसा नहीं कि इफ वी विन हम हमारा टाइटल हो ही गया. 100 निधि, मैं ये तो बोला ही नहीं. मेरा हाँ मेरा क्या है कि इफ वी विन, हाँ मेरा प्रिडिक्शन है वी विल विन द टाइटल. हाँ हाँ, नहीं मैं समझ गया, बट मैं बोल रहा हूँ कि हाँ. ये मैच मतलब जैसे नॉट यू बट जैसे बहुत लोग बोल रहे हैं ना कि ये मैच जो जीत जाएगा वो टाइटल जीत जाएगा. आई हैव अ फीलिंग इसमें ये सीजन में और भी बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स है. ऑफ कोर्स भाई, ऑफ कोई कोर्स. भी ये मैच जीते. वो यार स्पर्स डिसाइड करेगा टाइटल मोस्टली, मेरे को लग हाँ रहा है. स्पर्स का तो बैक टू बैक वो खेल रहे हैं सबके साथ. सबके साथ. बैक टू बैक दे आर प्लेइंग सम विथ एवरीबॉडी. या या नॉट जस्ट स्पर्स. आर्सेनल अंकित, स्पर्स विल हैव अ से इन द हाउ द सीजन एंड्स. स्पर्स तो बैक टू बैक खेल रहा है, नॉट जस्ट आर्सेनल. भाई भाई स्पर्स विल हैव अ आर्सेनल से. आर्सेनल का सीजन विल बी इम्पैक्टेड. आर्सेनल तो ऑब्वियसली, आर्सेनल तो टाइटल रेस में है भाई. मैं बोल रहा हूँ कि टाइटल किधर जाएगा, आर्सेनल, सिटी या लिवरपूल, इज बेस्ड अलॉट ऑन स्पर्स. आर्सेनल तो ऑफ कोर्स इन्वॉल्वड है. आर्सेनल अगर अगर ड्रॉ हो गया भाई, आर्सेनल को तो लगेगा टाइटल इज देयर्स, बिकॉज दे विल एंटर इनटू गेम वीक 28 29 टॉप ऑफ द टेबल, प्लेइंग सिटी Even देयर. Villa, even Villa, हाँ. City have to play Villa. We have to play Villa. Even Villa will मतलब थोड़ा be important. या या So it's a मतलब है भाई अभी इस सीजन में बहुत कुछ बचा है. Sunday is not the end. 2-1 Endo. Last time Japan player join Liverpool one league. हाँ मीनो की आप बात कर रहे हो. ये सब मतलब देखते हैं क्या होता है. But thank you so much एंडो for the को conversation. खिलाते जा रहे हैं हम लोग. 80 साल का हो गया एंडो को, हाँ कॉन्ट्रैक्ट पे कि कॉन्ट्रैक्ट देते. तू ही है जापानीज, हमको एक ही मिला है. जबरदस्ती पकड़े हुए हैं एंडो को, जाने नहीं दे रहे हैं. 2-2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं कि नहीं नहीं जाना नहीं है. सिटी वर्सेस आर्सेनल सब ड्रॉ उसको विद जाके ट्विस्ट. हाँ मौसी मौसी हाँ. बोल रहे हैं निधि, सब एंडो को जाके मौसी मौसी. भाई अच्छा था यार एंडो. एंडो तो बढ़िया था यार एंडो.
मतलब एंडो ने तो बहुत बढ़िया किया है. इवन मिनामिनो वाज अ प्लेयर जिसको उतना चांसेस नहीं मिला. जब खेलता था तो अच्छा ही खेलता था यार एंडो. हाँ सो एंडो मेरा बोल भी रहा हूँ, सॉरी मिनामिनो. मेरा मिनामिनो भी जब तो खेलता मोनाको था में. तो हाँ 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 मोनाको में 5 गोल मारे उसने. उसका बैड लक ये खराब था कि साला, फर्मिनो और माने थे. साला, फर्मिनो, माने, जोटा. नहीं नहीं, मतलब जोटा नहीं था. जोटा इज नॉट वन द लीग. जोटा नहीं था. बट जब वो था तब मतलब नॉट, जब वो आया था मैं बोल रहा हूँ, जब उसका, जब तक वो था तब तक जोटा भी आ गया था. हाँ हाँ, द वन सीजन वेयर या राइट. उसको सो चांस नहीं मिला. और ओरिगी उसको था. चांस. ओरिगी. हाँ ओरिगी. ओरिगी मार देता था वुल्व्स के साथ गोल. ओरिगी का वो गोल याद है तेरे को, वुल्व्स के साथ जो उसने मारा था टर्न करके. हाँ क्लॉप का साला ने पास हाँ दिया था यार. हाँ. तो वो तो मार देता है. तो मतलब एंडो का इट वाज अ केस ऑफ बैड टाइमिंग. इज नॉट अ बैड प्लेयर. मोनाको के लिए अच्छा ही खेल रहा है. 6 गोल है, 5 असिस्ट है. ठीक ठाक सा मिनामिनो, खेलता है वो. नॉट एंडो, मिनामिनो. हाँ एंडो, सॉरी मिनामिनो. हाँ. और जो लीग कप, एग्जैक्टली जो लीग कप हम जीते थे उसमें एंडो का बहुत बड़ा हाथ था लेस्टर के साथ. तो उसने सिंगल हैंडेडली गेम पलट दिया था. हाईएस्ट गोल स्कोरर था ना वो कंपटीशन. जो कोडी गैक्पो है इस साल, उस साल का मिनामिनो था. कोडी गैक्पो भी तो मार ही रहा है ना, उसने भी तो. ये मैच में मानस, बट व्हाट विल बी योर स्टार्टिंग लाइनअप अगेंस्ट सिटी? देख, अगर कोनाटे फिट है तो केलेहर, ब्रैडली, कोनाटे, वैन डाइक, रोबो, मैकैलिस्टर, एंडो. आई पर्सनली मैं एलियट के साथ जाऊंगा. साला, नूनेज, डियाज. एंडो, कोनाट, एंडो, सुबोत्सलाई, मैकैलिस्टर, साला, नूनेज, डियाज, रोबो, वैन डाइक, कोनाटे if fit, if not fit Gomez, ब्रैडली एंड गोल में तो केलेहर ही है. सो तेरा तेरा सिर्फ एक ही डिफरेंस है मुझसे. सबोच चलाए और मैं एलियट. एक ही डिफरेंस है हम दोनों से. That is the only difference. That is the only difference. वैसे मैच के बाद लाइव चैट में बहुत बवाल होगा. दैट टू सिटी विंस फुल फिश मार्केट. वो तो कुछ भी हो जाए बवाल ही होना है. वो तो ड्रॉ, विन और ड्रॉ तो आर्सेनल फैंस आ जाएंगे. हम जीत गए तो हम बवाल करेंगे. हम हार गए तो सिटी बवाल करेगा. वो तो उसमें क्या है, तो होना ही है. डियाज, नूनेज, साला, मैकैलिस्टर, एंडो, सबोत्सलाई, रोबो, वैन डाइक, गोमेज, ब्रैडली, केलेहर. हाँ, दिस इज माय लाइनअप एज वेल. एंडो बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये मैच में. ये मैच में एंडो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. भाई जीत जाए यार. मतलब निधि जस्ट जीत जाए यार. मैं तो सिर्फ यही चाहता हूँ कुछ जीत जाए. कैसे कैसे करके जीत जाए बस. शायद भाई तो बहुत कॉन्फिडेंट है यार. मैं तो 3-0 बोल दिया भाई. 3-0 का मुझे नहीं पता. 3-0 इज मतलब जज्बात जज्बात मतलब कायम नहीं कर पाए अपने अंदर इमोशन. टुक ओवर. या 3-0 बट इज, आई डोंट नो. हाँ, बायचेटिच को क्या है कि उसको शायद मतलब उसको क्लॉप हमेशा बोलता है ही लुक्स ओके, उसको पेन नहीं है, वो आएगा वापस जल्दी, बट अभी तक आया नहीं है भाई. सो आई थिंक व्हाट दे आर डूइंग एंड आई होप व्हाट दे आर डूइंग इज उसको रश नहीं कर रहे. क्योंकि इफ वी रश हिम इट्स नॉट गुड एंड वी सी हिम एज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फ्यूचर के लिए अपने. तो हम नहीं उसको ये कर रहे हैं. हाँ यार, बट हाँ नेक्स्ट अभी सीजन से चैंपियंस लीग में 2 मैच एक्स्ट्रा भी हैं. मतलब सीजन और जैम पैक्ड होगा भाई. बहुत ही एडरसन, रूबेन नेक्स्ट. डियास, एके, वॉकर, रॉड्री, स्टोन्स, फोर्डन, केडीबी. डोकू तो इंजर्ड है. और फोर्डन, आई थिंक डोकू इज इंजर्ड. डोको इज इंजर्ड और व्हाट? आई थिंक डोकू तो इज फिर इंजर्ड. अल्वारेस खेलेगा फिर. I from what I know, Doku and Grealish are injured. I'm not sure 100%, but I think कुछ knock भाई हुआ बट उसको. आई थिंक कोवाचिच और रॉड्री भी खेल सकता है. रॉड्री तो खेलने ही वाला है बट कोवाचिच आई थिंक कुड बी इन फॉर दिस गेम. लेट्स सी. हाँ. चल निधि एंड करते By हैं the ना. way,
एक लास्ट चीज इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। पॉल जॉयस ने रिपोर्ट किया है भाई कि फ्रेश टॉक्स विथ माइकल एडवर्ड्स इन बॉस्टन ओवर टेकिंग ओवर लिवरपूल। दे दो भाई चाबी, that will be huge। अगर माइकल एडवर्ड्स आ गया ना, मतलब भाई मानना पड़ेगा हाफ एफएसजी ने, अगर ये कर दिया ना हाफ द वापस। जॉब इज डन, हाफ द हाँ, जॉब इज डन इफ वी गेट मिकी एडवर्ड्स बैक ना। और उसमें से एक मतलब अभी के हिसाब से एक पॉजिटिव डेवलपमेंट, रिचर्ड ह्यूज जो है, पहले वो इधर था, बोर्नमथ में भी था। रोमानो तो ट्वीट करेगा ही भाई, जब ऑब्वियस हो जाता है तो रोमानो बोल देता है, तो उसमें क्या है। तो शुभम लिवरपूल के लिए पॉल जॉयस इज द मैन। जस्ट फॉर योर रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन, रोमानो को ऑब्वियसली रोमानो ट्रांसफर्स के मामले में कर देता है कभी कभी कुछ, बट लिवरपूल के मामले में पॉल जॉयस इज नंबर 1 सोर्स। सॉरी निधि। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि if we are able to get this right now, so and then उसके बाद just don't appoint the wrong manager, I think will be good. Michael Michael Edwards will head Edwards that, no? और Michael Edwards will हाँ probably head that appointment as well. हाँ, और मतलब इसका रिचर्ड ह्यूज जो है बोर्नमथ का, अपेरेंटली माइकल एडवर्ड्स इज लाइक ही इज वेरी he really likes रिचर्ड ह्यूज। सो टेक्निकल डायरेक्टर, स्पोर्टिंग डायरेक्टर एंड ये दोनों अपॉइंटमेंट्स हैं शायद जो हम नेक्स्ट करने वाले हैं। और इफ वी आर एबल टू, भाई अगर माइकल एडवर्ड्स को किसी भी तरह से मना सकते हैं ना, तो चुपचाप गेट इट डन, कुछ सवाल ही नहीं पूछना है। Michael Edwards wants to be the guy who controls everything. He wants to be the top man, not like यस not like उसको पावर चाहिए जयकांत शिखरे की तरह, but the point is he wants to appoint the sporting director, he wants to appoint the manager, he wants his data team, all of that. uh, देख इसमें कौन ये भी है निधि, एक एक इसका कौन पोटेंशियल हाँ, ये कि है एक कि ही आदमी के पास पावर एक ही आदमी, सेंट्रलाइज्ड है एंड पूरा। देन अगर मैनेजर जैसे क्लॉप, when they were working in harmony, क्लॉप आई एम श्योर इसको ना बोल सकता है नहीं चाहिए मेरे को ये प्लेयर टाइप्स, मुंह पे। अभी माइकल एडवर्ड्स को कितना हम पावर देंगे या देना चाहते हैं वो देखना पड़ेगा, बट अगर माइकल एडवर्ड्स आ गए, इट्स अमेजिंग भाई। माइकल एडवर्ड्स, रिचर्ड ह्यूज, अपेरेंटली उसने क्लब का कुछ परसेंटेज भी मांगा है एज शेयर, मतलब ही वांट्स दैट। बट इतना भी आउटलैंडिश चीज नहीं है यार, मतलब ऑफ कोर्स जैसे अगर तू कोई स्टार्टअप वार्टअप ज्वाइन आज भी, मतलब इफ यू गेट स्टॉक्स राइट। निधि बट लिवरपूल स्टार्टअप थोड़ी है। अरे मतलब मेरे कहने का मतलब है कि तू अगर कोई कंपनी ज्वाइन करता है तो यू गेट स्टॉक्स, मतलब बहुत या सीनियर पोजीशन पे, मतलब इसमें या लोगों को स्टॉक्स तो मिलते ही है ना। हाँ हाँ हाँ। तो मतलब अब वो अगर इसने कर लिया, डिपेंड करता है। कोई पूछ रहा है रेफरी कौन है मैन सिटी और लिवरपूल, मैन सिटी वाले में माइकल ओलिवर, ओके ओके। राइट। सो वो है, हो रहा है भाई, आपके कमेंट्स अब शो हो रहे हैं। ईसॉप्स, यस, ईसॉप्स तो एम्प्लॉइज को मिलते हैं, मतलब माइकल एडवर्ड्स वुड बी, मतलब हाँ टेक्निकली एन एम्प्लॉई बट काफी सीनियर पोजीशन पे। सो बट माइकल ओलिवर है भैया, ओलिवर नको संपला विषय। हाँ भाई, ओलिवर तो अब क्या ही करें, उसका वही है। क्या लगता है मानस? ब्रो मैं नीचे देख के निधि, आई एम विजुअलाइजिंग संडे ऑलरेडी, लाइक हाउ द वॉक अलोन विल साउंड लाइक, हाउ हमारे चैनल पे 2000 लोग वॉच अलोंग पे रहेंगे। आई एम इमेजिनिंग कि कमेंट सेक्शन इज गोना बी मैड, जो भी हो, मतलब एंड आई एम सो नर्वस राइट नाउ व्हाइल थिंकिंग अबाउट द गेम, लाइक प्लेयर्स क्या सोच रहे होंगे भाई। दिस इज अ मोमेंट निधि फॉर समवन टू बिकम अ हीरो वंस अगेन। विल इट बी समवन न्यू, और विल इट बी साला, और विल इट बी मैनचेस्टर सिटी हु ब्रेक आवर हार्ट्स अगेन? कुछ भी पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल। या पर सुमड़ी में आर्सेनल खुश निकल गया, कुछ भी पॉसिबल है। मतलब पता चला
Daksh is doing post-match analysis. खुश होके like. कपड़े उतार रहा है अपने खुशी में. Yeah. ट्रेंट है ही नहीं भैया मैच के लिए. कहाँ हो? ट्रेंट इज इंजर्ड. कहाँ से ट्रेंट वर्सेस हालैंड हो जाएगा? ट्रेंट इज इंजर्ड फॉर दिस गेम. ट्रेंट नॉट जस्ट दिस गेम, ट्रेंट आएगा इंटरनेशनल ब्रेक के बाद. यू डोंट नो दिस. अभी तो कुछ पता नहीं है कौन कहाँ जाएगा. अभी से कैसे बता दें? तो देखते हैं क्या होता है. बट वो आई दैट इज अ डिस्कशन फॉर अनदर टाइम, राइट? कि कब हम ये डिस्कशन करेंगे. चल भाई एंड करते हैं. 350 लोग अभी भी देख रहे हैं यार. तो 23,500 पे हम लोग पहुंच गए. थैंक यू सो मच. अपना टारगेट इस महीने के लिए 25,000 है. तो इफ यू गाइज हेल्प अस, आई थिंक वी कैन गेट देयर, राइट? एंड हेल्प करो यार. सब्सक्राइब करो. शॉर्ट्स वॉट्स हम लोग बना रहे हैं. अपने दोस्तों के साथ शेयर करो शॉर्ट्स को. कमेंट करो. बाकी शिवरात्रि एंजॉय करो भाई लोग. मजे करो. और जल्दी मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ. Until then, take care of yourselves, enjoy the weekend, and remember one thing: up the Reds! Right. See you guys. Have a great Friday.